In this one, we are going to discuss about a few basic formulas relating to the portfolio management. If we see the things more closely, so the portfolio management topic is common in CFA level 1 as well as CA final. So in this, we are going to discuss the very basic formula. We can say from where we proceed for the things for the chapter or the we begin. That's so to begin with, proceeding with the portfolio management formulas. First one is the annual return. If we need to compute the annual return, then it is D1 plus P1 minus P0 divided by P0. So what is basically this one is, so this is the P1 is what is our price at the end, P0 is the price at the beginning, divided by P0 multiplied by 100, we will get the annual return. Then comes the expected return. So what is the expected return? क्या होता है? तो expected return is summation of x divided by n. Summation of, that is what? That is summation x divided by n. That is, तो नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि अगर हमें मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स बाय एन. देन उसके आफ्टरवर्ड्स इफ वी नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस, वेरिएंस इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और वी मे सी द सिग्मा का स्क्वायर. तो दैट इज द समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन. और अगर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो तो अगर हमें मीन निकालना हो तो समेशन पी एक्स, और अगर हमें वेरिएंस निकालना हो देन इट विल बी समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? दैट इज द समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का होल रूट, एंड प्रोबेबिलिटी वाला हो तो सेम. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑलवेज बी जीरो. ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज द वेरिएंस विल बी जीरो. एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इफ वी नीड टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न क्या होगी पोर्टफोलियो का, तो हम निकालते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी मल्टीप्लाई वेट ऑफ बी प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सी. कोवेरिएंस ऑफ ए और बी क्या होता है? इस कोरिलेशन क्या ए बी का मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. तो ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज वी कैन से दिस इज अ कॉमनली यूज फॉर्मूला. कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू correlation of AB multiplied by standard deviation of A, standard deviation of B. Then comes the correlation of AB. Correlation of AB क्या होता है? That the same is covariance of A, B divided by standard deviation of A, standard deviation of B. Correlation, it is what? It is covariance. Covariance, how can we compute the covariance? That is what? That is the sum of deviation. Deviation is what? If there is a x security, so x minus x bar multiply y security, y minus y bar divide by n, so we get the covariance of A and B. Or if there is a probability in the scenario, that then it will be not divided by the average, it will be multiply each year or each scenario will be multiplied by the probability, and we will get the sum of deviation, that is summation p x minus x bar multiplied by y minus y bar. If there is portfolio variance यानी कि standard deviation का square, portfolio variance, तो it will be weight of A multiplied by standard deviation of A का square plus weight of B का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय
स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कोरिलेशन ऑफ ए बी, इस पूरी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, दैट द सेम इज टू बी कॉल्ड एज कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी. पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर सी का स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये जो आपका आया है पोर्टफोलियो ऑफ वेरिएंस का आप अंडर रूट कर दोगे तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. दिस इज व्हाट, दिस इज द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. यू विल कंप्यूट द सेम विद दिस weight multiplied by the variance, so you will get the portfolio variance, portfolio standard deviation. capital market line क्या होती है, capital market line is RF plus that is what, that is the Sharpe ratio, और जो portfolio है standard deviation of portfolio. Sharpe ratio is nothing but the risk premium, जिसे हम बोलते हैं risk premium of the market, that is रिस्क प्रीमियम. हम जैसे इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोलते हैं आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ मार्केट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. सिक्योरिटी मार्केट लाइन, दिस आर व्हाट इक्वेशन. दिस वी कैन, दिस इज टू बी what we say this thing, this is nothing but the slope of the capital market line. This we say the slope of the capital market line. So this is basically the slope. If we talk about the RF, so that is nothing but the intercept. Security market line RF plus बीटा एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम. और इसमें कैसे होता है, सिक्योरिटी में the same is to be divided by beta, whereas in the capital market line the same is to be divided by the sigma of the market. So this is so basic terms. All right.